And I'll also go live on Facebook so that people who have any difficulty in joining through the Zoom, they can watch on Facebook also. Just give me 2 seconds. I'll just put the webinar live on Facebook. Just a few seconds more. All right, so we'll be live and we'll share the link of the Facebook live so that people who do not, who have a network issue, whose internet is slow, they can just click on this link and they can go to Facebook and watch it there. But if your connection is proper, then you can stay on Zoom only, because this way you can ask questions. Otherwise on Facebook, you can type your question, we'll answer later on, but here you'll get live answers. So I'm getting the link and I'll just share on in the chat for everybody. For Facebook Live, I'm just typing in the chat. Just hold on, people, and we'll be covering things very fast. I posted the link in the chat, and if any of you is having any problem, you can just click on this link and watch the live webinar on Facebook. Thank you everyone for your patience. And since we'll be taking question after the webinar, wherein Swamiji will be live, you'll be asking questions. But it will be great if you could type the health issues that you're having and along with the number. Why this is required is because sometimes all the questions are not taken because we got shortage of time sometimes. So if you leave your number and your health issues, we can get back to you later on also after the webinar. And you can ask your questions later on after the webinar in the WhatsApp group. So we'll be answering the questions. We don't want anyone's question to be left out. That's the whole point. All right. So my name is Anil Chauhan. I'm part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. And you'll get to know about this company in a short while. But the main thing is you come here to listen to something which you may have heard for the first time. That is Ashtaang Chkitsa. The name is, the Chkitsa name sounds very traditional, and because it is traditional, this therapy or this Chkitsa was part of our Indian culture, but it has been long lost and forgotten. The reason being that we've started looking towards the West for solutions, be it any solution, be it health issues, be anything. We live towards the West. हम अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम अपनी चीज खो चुके हैं, right? So the Chkitsa Ashtang therapy or Ashtang Chkitsa is being revived by Swami Radvibhu, and he is the pioneer of Kumbhak therapy, and you will listen to him in a short while from now. I just want to let you know how this webinar will proceed. We'll play the recording of Swamiji's presentation wherein he explains what Ashtang Chkitsa is and how it works. See, this is a new thing for most of the people. So you need to understand how this thing works, because only after that you'll be able to appreciate and take benefit of this therapy. Now, after the video recording is played, Swamiji's video, then we'll invite a few people who are old participants in the program, who are enrolled for the main program, and they'll share their views and how, what benefits they've got and how they, feeling in the current situation. And after that, we'll share the program details. This is a 9 weeks program. If you opt for the 9 weeks program, this is a complete therapy which will be taught to you. After that, Swamiji himself will come live and he'll be answering all your questions. So you can type your question now or later on when Swamiji is live.
So this is how the webinar will proceed. Okay. So if you can just give me 2 seconds, I'll just start the video recording that I talked about, the video, Swamiji's video about Ashtaang Chkitsa. And you can type your questions also, or maybe again after Swamiji arrives, right? So just give me 2 seconds and I'll share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about neuro musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इश्यू विथ डाइजेशन.
Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है. नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस इज हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. इफ दे हैव बिकम ब्रिटल by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chkitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtaang Chkitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off.
This is wearing off is called as Vikriti and production is called as Prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things. Manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं, आप लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of Prakriti and Vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of Prakriti and Vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses.
So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chkitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it, खींचने की कोशिश करें.
जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chkitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, वो your fat tissue और adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज. दिस इज कॉल्ड एज सप्त धातु. 7 डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू की है आपके शरीर में. देयर आर 7 डिफरेंट डेंसिटीज, टिश्यू ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें.
Now keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए. जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chkitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma,
needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना वेस्ट छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtang Chkitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtang Chkitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy, and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen.
So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University, or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body, how much
your body has potential in what direction, in what vertical? It is your genetics, isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं.
Have you heard of this word udan? Udan suna hai naam aapne? Udna, udan. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही prana shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chkitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. All right. Thank you everyone for listening to Swami ji so patiently. And now we have some participants from our existing programs. So they'll be sharing their experience. And after that, we'll share the details of the 9 weeks program. And after that, as soon as we finish with that, Swami ji will be live to answer all your questions. So let's invite Indrajit. Ma'am, yes, she has joined.
I'll just unmute you, ma'am. आप unmute कर लीजिए अपने आप को. Okay, thank you. Yeah. जी ma'am. Yes, good evening, sabko. And I'm Indrajit. I've just completed my 18 classes with the team, Avisa. And I can guarantee you that this is the best decision of your life if you take it today. I started with a very injured, very, very painful right knee, which was troubling me for the last 10 or 11 years. And I had not heard about this Ashtaang Chkitsa, but I'd only known about Vinyasa because my daughter-in-law used to teach that when she was in India. She's from Australia. And a lot of people used to come to her. They used to love it. And that's when I heard the word Vinyasa being mentioned over here, I thought this is the right kind of Chkitsa that I need. Or मैंने immediately course join kara, and I can with full what should I say, honesty and truth, I can say within a couple of days after the first 2 classes, I started feeling that my pain had 90% diminished. और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता था, but now I'm totally fit. And वो जो feeling है that internal जो अभी स्वामी जी बता रहे थे ना कि आप internally heal होते हो, वो feeling मुझे हुई कि वो सब joints and वो सारे body parts जो लगता था कि जंग लग गया है and I can't even properly move and उठने बैठने में भी problem लगती थी, वो सारा इतना free हो गया. I feel so light and I feel like I'm totally like a new body, living in a new body now. And this is the most amazing experience of my life, and I wish to continue this forever. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. Now we'll listen to Sunita, ma'am. Yes. Let me put you on spotlight, Sunita, ma'am. Just give me some time. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Welcome. Right. Thank you so much. I'm also very happy that I joined this course. I did see, I would keep seeing it on Facebook, these webinar things. I mean, the notice of the webinar being put on Facebook. So I thought, okay, let me just listen to one of the webinars. So I did listen to Swami ji and the webinar, and somehow I found it quite convincing. So I've always been doing yoga and, pranayam, etc. I've been doing for many, many years, but I have a lower back problem and spondylitis. But I find that you can hear me, right? Yes, yes, loud and clear. Yeah. So I find that after I started doing this course, I've completed the 9 weeks course, and I also got my customization from Swami ji. But I think we'll have the class tomorrow for that. But I find that I found a lot of relief in my lower back pain, and I really don't, otherwise if I sit for too long or, do some extra work or stand for too long, my back would give me trouble, which I find has reduced considerably now. And my spondylitis also very much under control. Also had a very severe acidity problem, for which I'm finding a lot of relief after doing this at morning ghee cow and doing all these kumbhak therapy. It's really made a lot of difference to my acidity problems also, right? So I'm actually find that a lot of improvement, knee problems, knee pain. So if I sit for too long, my knee would hurt. Even that has shown a lot of improvement. I wouldn't say I've got over it, but it's slowly getting there, I think, because I'm feeling much, much better nowadays after doing this. And I've been very regular with my practice. That is one thing. I've been very, very regular with my practice. I tried not to miss any day, day in the 9 weeks. I've been quite regular with my practice. And yes, I'm so glad. I have only good things to say. I'm very happy I joined this course. It's been really helping me a lot. So I would suggest people, if any of you do have any kind of problem, health issues, do join this, because it's really, really very, very helpful. Right? Thank you so much. Thank you, Sunita ma'am, for coming here, sparing time and sharing your experience. Thank you so much. And now we'll present the program details. What a lot of you may be
waiting for. I'd like to just share my screen. Give me 3 to 4 seconds. Can you see my screen? Yes. Okay, great. All right. So we'll cover the details very fast so that you can ask your question from Swamiji. First of all, this is a guided program. It is conducted online by trained Kumbhak mentors. Like Swamiji told in the video that there are 3 modules. Module 1, Module 2 and Module 3. Or you can call them Vat, Pitta and Kapha. Duration of each module is 21 days. So the total program duration becomes 63 days. The main kriyas, the classes. Now, duration I've written here, 9 plus 1 is equal to 10 weeks. Now, why 10 weeks? Why 1 week extra? This is for customization. And what exactly is the customization? I'll get to, you get to hear from me in a short while from now, what customization means. Now, all classes, these are live classes, and every week there'll be 2 live classes. One will be the learning class or the main class, and the second one would be the mentoring class or the practice class. You'll also get access to videos and written instructions. So even if you miss any class, you don't have to worry about it. What are the next steps? You pay the program fee, and there's a special webinar pricing that we have for all of you. And you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for you to access the recordings and everything. And then you start your classes with module 1. Now, module 1, again, 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring classes. Same goes for module 2 and module 3 also. 6 plus 6 plus 6 makes 18 classes. Now, total classes for learning would be 18. Then there'll be 2 extra classes for customization. And I'll get back to, I'll be getting to customization, what it is. And then there'll be 2 Q&A classes with Swamiji, which happens on the 15th of every month. So engagement is of 10 weeks. Now the class start date for the 78th batch. This is the 78th batch that will be starting on 2nd May, which is a Monday at 7 p.m. This batch starts at 7 p.m. Module 2, when you complete module 1, module 2 will start on 24th May. Module 3 starts on 15th June. So you'll be going one by one, module 1, module 2, and module 3. Mentor classes. For module 1, the mentoring classes would be on Thursdays. For module 2, mentoring classes will be on Fridays. And for module 3, mentoring classes will be on Saturdays. And we'll share all these details in the WhatsApp group as well as in chat also. What is the class experience like? These are live sessions where mentors watch all the participants, and the written instructions are provided inside the dashboard. You'll get a login ID and password through which you can access the video, the class recordings, as well as the written instructions. Because many people, they want to, it's easy and convenient for them to just read and do. For some, they just want to see and do. So whatever suits you, people choose that option. Session recordings are there. I've already told you. Then there are a lot of extra things that Swamiji shares with all the participants. There are mental practices. There's a unique diet perspective. You get a video about the diet. It's not a diet plan, because diet plans, they don't work because every body is different. And what will be provided in this food video would be the basics of the food, how food can support your body without harming in any way. Then there will be simple detox process, and there are a lot of knowledge that Swamiji shares. Before coming to the actual program cost, I'd just like to share or bring your attention to the kind of money that we could be spending on just managing the disease that we are into. I've written doctor fee. These are yearly figures. They may be lower or higher depending on the city of your residence. You could be spending anywhere between 6,000 to 12,000 on the doctor fee alone. And if you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000.
medicines 15,000 and 30,000. Then if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year you could be spending already. Now, why I'm sharing this? Because you need to know what you're getting for the money's worth, because the money that you earn is hard-earned money for most of us. And we need to know what money we are spending and what we are getting for that kind of money. Are we getting good return on that money? Are we getting good solution for that money? So that's why I shared this number. This is already we could be spending. So when I inform you, when I announce the fee for the program, then you know that how it makes sense to all of you, or most of you. Before share the program, it's very important to know who this program is not for, so that it's clear who this program is for. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. See, we are so used to from just right from the childhood. If we face any health issue, just pop a pill, go to a doctor, pop a pill, go to a doctor, pop a pill. So we become so habitual about it. So that's why I want to just emphasize that this is not that kind of a program. This is not for those who are not ready to work on their body. Again, all the points are interconnected. I'm just written it in a different way. We need to work on our body, as Swamiji said, because nothing else from outside will make it strong. Only the body can make it strong. Who this program is not for? It's not for those people who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. Again, many people who we talk to about the program, a lot of them say that we're so busy that we can't take out this time for the money for this therapy. And so one thing I just want to share that if there's something so important to you that you won't live without it, you'll take out time for it. It's just a matter of priority. What we prioritize, that we take out time for. Even if we are 24 hours busy, we'll still be able to take out time. So that's the kind of investment you need to make in your body. So if you cannot make that kind of investment per day, I'm talking about in terms of time. If you cannot do that, so this won't be working for you. And this is not for those who are impatient. That's very clear. And this is not for who are looking for a free treatment or just tips. See, a lot of people just attend a lot of webinars. They go to YouTube channel. They're looking for some tips, but therapies don't work for tips. You need to have the full understanding. And here also, in this webinar also, there are people who may be just looking for tips, and that's good enough. I mean, that's fair enough. There's nothing against anybody else. But I just want to emphasize that even if you try a lot of free things, the time it involves, and ultimately every one of us are mature people. We know there's nothing free in this life. If there's something for free, we pay with the time or the delayed results or no results at all. So that's why I want to just emphasize on this. Now, what all you get in the therapy, in the whole program, Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This in itself is worth the total cost of the program. Because most of the therapies, most of the treatments that you come across, they do not arrive at the root cause. They just make an intelligent guess and start treating you and curing you, trying to find something that they can, recommend to you. This alone would be, the total cost of the program in itself. Now, weekly there will be one main class of 60 to 90 minutes. Weekly, there will be practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 1 year. Like I told you that all the classes will be recorded. So the recording of all these classes will be provided through a course dashboard, the access of which you will be having for complete full 1 year. So there's nothing to worry about if you even miss, many classes. It's always recommended not to miss any class because live classes are live. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? In the class recording, the whole class is recorded. Whatever people are saying, that is also recorded. But in the kriya, these videos, each kriya will have a small video. That's how to do that kriya.
So if you just want to save time, you just watch the video of that Kriya. Why to go through the whole class of 60 to 90 minutes? So that's the difference here. These are the videos of all Kriyas being taught separately. There'll be written instructions. If you want, if you're, just want to print out and, learn and do the Kriyas from written instruction, you can do that. Now, this is very important. Private WhatsApp group to ask doubts, questions 7 days a week. Or 2 days of the week, you'll be live with us. On the remaining 5 days, when you will be practicing alone. And if you have any doubt that time, where do you go? This is where you go. This is the group, class group, wherein you'll be asking your doubts. Our mentors are there. They'll be guiding you, answering your questions. If there's a need, they'll be calling you also. And if there's a further need, they may do a video call also. So this will be your house or your home for the next 10 weeks. And after the 10 weeks, I'll explain what will happen after the 10 weeks. Individual participant progress tracking feedback will be sent a form link wherein you'll be writing what all went well, what all didn't go well that day, and what you felt good, what you felt bad, or where did the problem increase or did the problem decrease. So it's tracked on a daily basis. 9. Therapy customization for each participant in the 10th week. This is so important. Now, the first point was Pran Shakti diagnosis. In the 10th week, the therapy will be customized as per each participant's diagnosis. Many people may have questioned that if different people have different problems, why the same class? The same class remains for 9 weeks because the body needs to be trained into breath control. And after that, the diagnosis which was done will be used to fine-tune and customize each participant's therapy. And after that, so because that will be directly addressing the root cause of the disease, why the problem started. 10th point, old students group. We keep in touch even after the program is over. I think this is the only program wherein we keep our participants with us after the program is over. Why this is important? Because there may be, the doubts can come about any Kriya anytime. And we understand this is an online program. And we understand that unlike a face-to-face communication, unlike a face-to-face interaction, things can sometimes become difficult to do online. So we understand that. That's why we'll shift you to an old students group after the 10 weeks so that you can still ask questions, you can still ask doubts. And that remains for lifetime, unless you don't want to remain with us. That's a separate issue. But we'd like to have all our participants with us so that you can do and correct and clarify your doubt, do the Kriyas properly. If you do the Kriyas properly, you'll get results. That's the only thing that we are bothered about. That's the main primary concern. Now, I've listed all these points. Program fee for Ashtaang Chkitsa 9,500. That's the normal price. But since you people are, you stayed here for so long, listening carefully. So we have a very special webinar pricing, which I told you about. Just 5,500 for the complete 10 weeks program. And I've just done a little math here. I've divided 5,500 by 22 classes that you get. So it just comes to 250 rupees per class, plus all the 10 benefits that I explained just now. So this has been made so affordable that everyone can afford. You can just see for yourself. So anybody can afford. You don't have any reason not to enroll in the program. How to enroll? You pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, fill the participant onboarding form, join the first module, start attending classes to learn Ashtaang Chkitsa. These are the payment details we'll be sharing in the group also. And the fee, this discounted fee is valid till 30th April, tomorrow, day after, till Saturday. So you can enroll fast. Now, I'd like to just stop here for a while and talk about the super team that we have. Because see, howsoever good a program may be, but if there's no support or the support is not proper, the program doesn't work. We understand that. That's why we have a team of 9 full-time people, staff members to
support you. We have Rachna Shrimal Botra, she's the program director. Shalini Bhagwat, she takes care of all the classes, she arranges your classes. And then Atul Sharma, one of the senior mentors, Pooja Chopra, another mentor, Ranjana, another mentor, Rakhi, another mentor, Neha Upadhyay, she is in charge of enrollments. So till the class start on Monday, you'll be interacting with Neha a lot about doubts. She'll be sending you payment details, everything. Anil Chauhan, that's me. After the webinar, you can post all your question in WhatsApp because maybe we won't be able to take all. So you can ask in the WhatsApp group and I'll be the one who will be answering all your questions. I'll be there today till 11 p.m. answering each and every question. And tomorrow also, until the classes start, I'll be answering all your questions in the WhatsApp group. And then we have Himanshu Reddy. He's a technical person. He takes care of all the login IDs and password. When you enroll and if your video is not playing, he's the person you'll be getting help from. If your instructions are not downloading, any kind of technical problem to access the videos, Himanshu is the person that will be helping you. So with this, I come to the end of my presentation and I'll just check if Swamiji has joined, because a lot of you may be waiting for getting your question answered. Yes, he's there. I'll just put him on spotlight. Swamiji, namaskar, welcome. Let me just unmute you. Okay. So I'll just read out questions from the starting and then we can. Okay. Suparna Datta ma'am, right? Leg pain, especially knee pain. That's already been told so much about. Just join the program and everything will be taken care of. Let me get to the next question. Pain in both legs when I lie down at night, leg cramps. Srinivasan ji is asking this question. Cramps in the leg is becoming pretty common, and in this season is Grishma. Grasati ase Shleshma is Grishma. When this season sucks out juice from your body, this is Grishma. And many people might get a lot of cramps and pain and weaknesses in their body. Another reason for this is the dehydration factor which has increased in human body. अच्छा, आप मुझे बताइए कि आसपास में पानी कहाँ है आपके? जमीन के नीचे पानी कहाँ गया? The water table has gone down, isn't it? ताल, तालाब, सरोवर कहाँ पे? No water. So there is almost like a scarcity of water for your body. Proximity of water has come down drastically in the last almost like 20 to 25 years. So water is that element which actually integrates your system. So one reason is dehydration factor increasing. Dehydration आपके body में ज़्यादा हो रहा है. The second factor is inflammation. Dehydration की वजह से आपके शरीर के अंदर में inflammation होता है. So many people might be facing acidity, gas issues, indigestion, acid reflux, irritable bowel syndrome, constipation, यूरिक एसिड इंक्रीज. ये सब चीज आप कॉमन देख रहे हैं ना, आजकल बहुत हो रहा है. कई लोगों के हाथ पांव में जलन होता है, इन्फ्लेमेशन, जलन होता है हाथ पांव. सो इन्फ्लेमेशन फैक्टर इन द बॉडी हैज इंक्रीज्ड. ये इन्फ्लेमेशन कैसे इंक्रीज होगा? इन्फ्लेमेशन कैसे इंक्रीज होता है? आपको कोई भी बात समझना है ना, तो आप अपने रिलेटेबल टर्म्स में लेकर. ये जो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, इससे नहीं समझ में आता. आपको लगता है कि समझ में आता, नहीं.
तो आप खरोच लो अपने हाथ को विथ योर नेल्स, अपने हाथ को ऐसे खरोचोगे ना, खरोच लें जोर से, तो इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगी ना, जलन होती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो बाहर खरोच से, जोर से खरोच लिया, फिर जलन को खत्म करने के लिए क्या करें? व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड टू ड्रॉप द इन्फ्लेमेशन और पुट डाउन द इन्फ्लेमेशन? कोई घी, घी लगा लो वहां पे। घी लगाने से जलन कम होता है ना, कम होता है। सो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे आ रहा है? द मोमेंट यू पुट अ केमिकल पिल इनसाइड, जैसे ये केमिकल दवाई आप डालते हो, इट्स अ केमिकल बॉम्ब विच हिट्स योर लिवर, ये लिवर के ऊपर ये हमला करता है, ऐसे ही खरोचना जैसा। स्कारिंग ऑफ लिवर हो रहा है ना इसी वजह से, इसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। आजकल बहुत बढ़ रहा है लिवर सिरोसिस। फैटी लिवर सुना है ना आपने, लिवर वीकनेस। फैटी लिवर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तो जलन पे घी डाल दिया, लिवर भी तो घी डाल के कम करेगा, तो फैट बढ़ाएगा ना अपना, तो बचा रहा है बेचारा अपने आप। आप उसका रिस्क कम नहीं कर रहे हो, फैट खत्म करने की कोशिश कर। क्या ये सही ट्रीटमेंट है? ये तो गलत ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं? सो द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज केमिकल इनसाइड, योर बॉडी गेट्स इन्फ्लेमेटेड, लिवर से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। एंड विच एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज वीक, स्पेशली द जॉइंट्स पे, क्योंकि टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स में सेलुलर वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का असर सबसे ज्यादा वहां पे होता है। देन ऑल्सो लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड्स कहते हैं इनको, वहां पे इन्फ्लेमेशन का असर सबसे ज्यादा होता है। तो आपके शरीर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ज्यादा बढ़ता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू हैव सम क्रॉनिक एलिमेंट, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इशू, थायराइड इशू, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जैसे मैंने वेबिनार में भी बताया, अगर आप कमजोरी, आपके इन्फ्लेमेशन आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपका उदान एस्पेक्ट वीक है, आप खुश नहीं हो पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, आप हल्के नहीं फील कर पा रहे, योर बॉडी इज नॉट फीलिंग लाइट। आजकल तो है ना, कोई भी खुश नहीं हो पाता, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी खुश नहीं है कोई। सो उदाना एस्पेक्ट, अपने को ऊपर उठाने का जो एस्पेक्ट है, बहुत वीक है। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीक चीज कहां पे है? इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड योर बॉडी। तो आपके शरीर की शक्तियां कम हो गई। हाँ, जैसे उदाहरण एक बताया, डाइजेशन इश्यू आजकल सभी को है ना, तो गारे पत्ते अग्नि, वो फोर्स कम हो गया, वो अग्नि कम हो गई आपका। ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू है तो दक्षिणाग्नि कम हो गई। आपकी लाइफ में अगर सेलिब्रेशन कम है तो आह्वानी अग्नि कम हो गई। 6 बल होते हैं आपके शरीर में, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे बल हैं आपके शरीर में, ये कम होते जा रहे हैं। तो भोजन से क्या ठीक हो जाएगा? वो अच्छा भोजन करेंगे नहीं, उसको भी तो बल लगता है पचाने में। अगर आपका शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो कैल्शियम देंगे कितना भी, तो भी आपके शरीर को कैल्शियम नहीं मिलने वाला। इसीलिए एक भी इंसान का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ आज तक। भाई कैल्शियम की कमी है, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर। तो आप कैल्शियम कितना भी खाएंगे तो वो क्या ले लेगा? नहीं ले पाएगा, उसका वो बल कमजोर है। तो करना क्या है? कैल्शियम सप्लाई करना है? नहीं, उससे कैल्शियम किसी का मिलेगा नहीं किसी। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं 200%। ऑस्टियोपोरोसिस एक इंसान का नहीं जाता। तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की, सोखने की जो शक्ति है आपके शरीर की, वो बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो आप सोखते कैसे हैं? सोखते कैसे हैं? जूस को कैसे खींचते हैं? हाँ, आपके सांस का बल चाहिए ना, खींचने का बल चाहिए, इसी को कुंभक कहते हैं। तो जब आप कुंभक करते हैं तो अपने शरीर की शक्तियों पे काम करते हैं, और वही कमजोर है। कमजोर इंसान के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कंपन भी होता है। इट इज नॉट जस्ट कि उसमें जलन है या फिर दर्द है, कंपन, कांपेगा भी, चलेंगे तो कांपेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, चक्कर आते हैं,
तो इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर की शक्तियां कम हो गई, भोजन से नहीं बढ़ेंगी शक्तियां। फूड इज नॉट अ सोल्यूशन, इट कैन बी अ लिटिल सपोर्ट। देन व्हाट एल्स? दवाइयां, मेडिसिन, नो, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। इमरजेंसी में आप ले लो, वो एक अलग बात, बहुत अगर सिचुएशन खराब हो गई, समय ले लिया, वो एक अलग बात है, बट वो कोई सोल्यूशन आपको नहीं देगा। पिछले 100 साल की हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री आपके सामने रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दवाई से लोग और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा। थोड़े समय के लिए वो मैनेज कर लेता है, मगर आपको और कमजोर कर देती है दवा। तो एक तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट। मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। बहुत जरूरी हो तो कर लीजिए, अदरवाइज आपकी लाइफ को अच्छा नहीं बनाएगा और खराब करता है। फूड इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज गुड टू हैव अ गुड फूड बिकॉज इट इज गुड सपोर्ट। एक्सरसाइज की हिम्मत ही नहीं है, और करेंगे भी तो वो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे काम ज्यादा करेगा। इन तो 50 साल का सबसे हेल्दी स्पोर्ट्स का बंदा अभी हार्ट अटैक आ गया। इतना एक्सरसाइज करने वालों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक्सरसाइज आपके बाहरी शरीर पे अच्छा काम कर, मगर आपके लिवर पे, हार्ट पे, किडनी पे इतना ज्यादा उसका असर नहीं होता, और अंदर के ऑर्गन हमारे कमजोर, उसके फंक्शन कमजोर, तो जरूरी है इस पे काम करना। आज इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है अंदर काम करना, और अंदर काम करने के लिए कुंभक इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई और चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये जरूरी है, आप करेंगे वैसे ही आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। आपके शरीर की बाकी कमजोरियां देखिए, हमारे जितने लोग करते हैं ये अष्टांग चिकित्सा, इसमें कोर कुंभक है। वो कहते हैं करते ही हमें बहुत एनर्जी आती है और हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं, नींद की जितनी आवश्यकता नहीं है। आज हमको खुशी है, हम काम करने में खुशी होती है, शरीर हल्का लगता है, मन में हल्का लगता है, मन में उल्लास है थोड़ा। ये कहां से आया? आपके शरीर से ही आया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका शरीर मैजिक है, इसको सपोर्ट कीजिए, और ये आपके जीवन में इस तरीके का चेंज लेके आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। There cannot be a magical pill, but your body is magic. Work upon it and you'll see the magic. Next question is from Abhaji. Back pain, pinched nerve, herniated disc, recently pain and hip joint and groin region, stiff back and leg pain when I sleep. इसको मैं बहुत टेक्निकली हर वेबिनार में इसका आंसर देता हूँ। सपोज कीजिए आपने कुछ पत्थर के टुकड़े जिसके बीच में छेद है, ऐसे 33 पत्थर के टुकड़े आपने एक रस्सी डाल के इकट्ठा कर दिया, उनको इकट्ठा कर दिया, तो वो एक साथ ही रहें, वो ढीले ना हो, कोई भी पत्थर खिसके नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? उस रस्सी की एक टेंशन होनी चाहिए ना, जिस पत्थर है, बीच में छेद है, आपने बीच में रस्सी डाला और 33 पत्थर इकट्ठे कर, वो खिसके नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? वो रस्सी का टेंशन सही होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो ढीला हुआ तो वो पत्थर खिसकेंगे, इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी ऐसे ही। तो ये जो टेंशन है जो सही होना चाहिए, इसको कहते हैं व्यान। ये जो इंटीग्रेट करता है आपके स्केलेटल सिस्टम को, इकट्ठा करके रखता है। अगर ये व्यान पक्ष आपके शरीर का कमजोर हो गया, तब जॉइंट में प्रॉब्लम आएगा, डिस्क में प्रॉब्लम आएगा। आप एक डिस्क ऑपरेट करा लोगे, दूसरी जगह आ जाएगा। आप एक शोल्डर में ऑपरेशन करवा लोगे, दूसरी जगह आ जाएगा। एक घुटना बदलवा लोगे, दूसरा घुटना बदलवा लोगे, चलना भी मुश्किल होगा। क्या ये सोल्यूशन है? ये तो आपने थोड़ा लोकल ठोका ठोकी कर दिया, उससे वो टेंशन तो नहीं बन आएगा ना आपके शरीर के अंदर, जो कि सब पूरा इंटीग्रेट करके रखता है। पूरे आपके हड्डियों के ढांचे को जो जोर देके सही बना के रख रहा है, उसको व्यान कहते हैं। अगर वो ठीक करेंगे तब जाके आप इंश्योर करेंगे कि आपका स्लिप डिस्क आगे कोई दूसरा ना हो, जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो, जॉइंट का इशू ठीक हो, आपके स्केलेटल सिस्टम की इंटीग्रिटी ठीक हो।
जब तक जिए तब तक आप चलित अवस्था में हो, बिस्तर ना पकड़े, तो व्यान को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या सिखाते हैं? 3 चीज सिखाते हैं। थर्ड पार्ट कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट है, दोबारा से कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? व्यान क्रिया कुंभक, जो कि इसी चीज को ठीक करेगा, आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी को, हड्डियों के ढांचे की इंटीग्रिटी। यही नहीं, आपके शरीर में अगर इधर उधर कुछ चीज निकली हुई है, बल्ज है, तो उसको, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, सही करता है, आपके शेप को सही करता है ना। तो वो शेप को सही करने के लिए जो जोर चाहिए, आपके ही जोर चाहिए ना। आप जोर नहीं लगा पा रहे तो शेप बिगड़ रहा है ना। आप, कोई दूसरा तो नहीं खींच रहा आपके डिस्क को, कोई दूसरा तो आके नहीं खींच रहा। आपका एक बल है ना जिससे कि वो इकट्ठा रहता है, वो कमजोर हो गया ना, तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। थोड़ा रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो रिपेयर कर लीजिए, मगर असली ट्रीटमेंट तो करो। ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना, केवल रिपेयर से काम नहीं चलेगा, है ना। तो टेक्निकल टर्म्स में व्यान फैक्टर कमजोर हो गया, उसको बढ़ाएंगे तो ठीक होगा। दूसरा फैक्टर, एक और बात बता देता हूं उसमें, आपके शरीर में ना अलाइनमेंट चाहिए, 3 अलाइनमेंट चाहिए। पहला अलाइनमेंट नाभि, नाभि का अलाइनमेंट चाहिए, उसकी जगह खिसकती, नेवल, द पोजिशनिंग ऑफ नेवल कीप्स चेंजिंग। इफ इट चेंजेस, then you will have all kinds of digestive disorder, एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर, डाइजेशन का डिसऑर्डर, ये होगा। नाभि सही जगह होनी चाहिए। दूसरा, कौड़ी, मिडल ऑफ चेस्ट, जहां पे एक छोटी सी हड्डी है ना छाती के बीच में, कौड़ी कहते हैं उसको, वो सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो लंग और हार्ट डिजीज आएगा। और तीसरा है नले, जांघों का अलाइनमेंट होना चाहिए, नहीं तो बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये तीनों अलाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा आपको। तीनों अलाइनमेंट बनाने के लिए तरीके हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट हम करते हैं हठ विन्यास, उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं। सो अष्टांग विन्यास में आपके अष्ट शरीर पे काम किया जाता है। कोई भी चीज जो इनमें से किसी भी फैक्टर पे काम करती है वो इस कोर्स में है ही, और वो करेंगे तो ओवरऑल ट्रीटमेंट करना है ना, लोकलाइज ट्रीटमेंट नहीं, ओवरऑल ट्रीटमेंट। ओवरऑल ट्रीटमेंट करेंगे, आपके शरीर का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ेगा, अलाइनमेंट होगा, फिर देखेंगे आप इससे और ज्यादा काम ले सकते हैं। somebody said spine सर्जरी हुआ है तो you need it more, बिकॉज जिनका भी सर्जरी हुआ है ना, उनके फैक्टर्स और डिस्टर्ब हो जाते हैं शरीर के, उनको सही रखने के लिए काम करना ही पड़ेगा अपने ऊपर। उनको सर्जरी बहुत सारे फोर्सेस को डिस्टर्ब करता है हमारी बॉडी के, तो उनको बना के रखना, वापस लेके आना, इसके लिए और जरूरी है। Next question is from Ramadas ji. He's saying, I'm having severe pain in the right upper arm. Solution. Severe pain in the right upper arm. See, there can be many reasons for that pain. हमारा प्रोग्राम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को की तरफ में डायरेक्ट। सो राइट आर्म से ना नर्व जो राइट आर्म की तरफ में जाती है वो आपके स्पाइन ऊपर सर्वाइकल एरिया में रीढ़ की हड्डी से निकलती है। अगर उस एरिया में आपको थोड़ा तकलीफ है, हाँ, कहीं पे घिसावट आ गई तो, और एक नर्व दबरा है आपका उस जगह पे सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल के जस्ट नीचे की तरफ में, तो आपके राइट आर्म की तरफ में दब रहा है तो राइट आर्म, या लेफ्ट आर्म की तरफ में दब रहा है तो लेफ्ट आर्म की तरफ में पेन आएगा। एक तो कारण ये हो सकता है। अगर पूरे आर्म में पेन है तब तो नर्व का इश्यू है। कभी कभी आर्म में पेन किसी एक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट की वजह से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उंगलियों में कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आर्म में पेन आ रहा है। तो बहुत कोशिश करके अगर हम पता भी लगा लें कि अच्छा वो
आपकी सपोज करो रीढ़ की हड्डी में नस फंस रही है और उसको ऑपरेट करके ठीक कर देते हैं, तो दोबारा फंस जाएगा, दूसरी जगह फंस जाएगा। वो फंस क्यों रहा है? एक तो आंसर मैंने इसके पहले दिया कि आपके स्केलेटल इंटीग्रिटी का जो फैक्टर है, जिसे व्यान कहते हैं, वो वीक है। दूसरा, डीजेनरेटिव फैक्टर कई लोगों का ज्यादा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं ना, इनको जब तक आप अपने रिलेटेबल टर्म्स में नहीं लेके आएंगे ना, तब तक ये काम नहीं कर सकते। ये शब्दों से काम नहीं होता। आपने देख लिया 70 से 80% प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है एलोपैथी के पास, जिनके पास शब्द ही शब्द है, केवल मैनेजमेंट करते हैं। तो डीजेनरेशन, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। धुआं कहीं पे है, एक ट्रक है और उससे काला धुआं निकल रहा है, डीजल का ट्रक, और आप वहां से गुजरते हैं, यू पास बाय दैट एरिया। आप सांस ज्यादा लेंगे या कम? आप सांस कम लेंगे, नाक पे रुमाल डाल लेंगे, हाथ डाल लेंगे, बंद कर लेंगे, आपका शरीर भी कम लेगा। आप नहीं भी अगर हाथ डालते तो भी आपका शरीर रोक देगा, है कि नहीं है? जब भी आप सांस जितनी जरूरत है उससे कम लेते हैं, ये आपका पावर सप्लाई है ऐसे मान के चलो, तो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, जब पावर सप्लाई कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, बनती चीजें कम है। इसे रीजनरेशन कहते हैं, किसी चीज का बनना। तो आपके शरीर में बनने का फैक्टर कम हो। अगर बनने का फैक्टर कम हो, बिगड़ने का फैक्टर तो उतना ही रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। भाई देखिए, आप अपनी लाइफ के साथ में कुछ भी करो, डेथ के साथ में कुछ नहीं कर सकते। सुपर एफिशिएंट होता है, 100% एफिशिएंट होता है डेथ, ठीक है ना? तो डीजेनरेशन का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो उतना ही रहेगा, रीजेनरेशन कम होगा। तो आपकी घिसेंगी ज्यादा चीजें, बनेंगी कम, सिंपल है कि नहीं है? तो डीजेनरेशन फैक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, एनवायरमेंट क्या सही है हमारे लिए? जो पहले था 100 साल 200 साल पहले, ऐसा ही एनवायरमेंट है आज? नहीं है ना, पोल्यूट हो गया, खराब हो गया। तो आपका शरीर सांस कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है? आपको मालूम भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप किसी प्राकृतिक जगह पे जाएं तब तो आपको खुल के सांस आती है, मालूम है आपको? तो डीजेनरेशन फैक्टर तो हमने बढ़ा दिया। देखिए, फिरंगियों ने क्या कमाल का काम कर रखा, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने को खत्म करने के पूरे सारा सब कुछ बना रखा। सबसे बेवकूफ प्रजाति है ये गोरे लोग, फिरंगी प्रजाति, और आज मेडिकल साइंस उन्हीं के हाथ में है। ऑब्वियसली वो सबको बर्बाद कर देंगे, बुद्धि कम होती है इनपे, सारा सारा पर्यावरण बर्बाद कर, जीने लायक नहीं छोड़ो। अब जीने लायक नहीं छोड़ा तो आपकी बॉडी तो रिस्क में आएगी ना, ये तो बचाना चाहती है अपने आप को। आपका शरीर कभी नुकसान नहीं करता, हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो ये इम्यूनिटी को उठाता है ना, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। फिर सोचता है कि भाई किस चीज से बढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा बॉडी में कोई चीज, फिर कम करता। लेकिन क्या रिस्क तो है, आपका शरीर सांस ही कम ले रहा है, उसको वो चीज मिल ही नहीं रही। भोजन कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, रिस्क है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या आजकल तो डॉक्टर आपको बोलेंगे ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है जी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये तो देखो अपने आप ही होता है। नहीं साहब, ये हमने बनाया है। अच्छा, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम कम होती है, कुछ लोगों को ज्यादा होती है। क्यों कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है या कम है? क्योंकि उनकी शरीर की शक्तियां, रेजिलियंस, झेलने की क्षमता ज्यादा है। तो देख लीजिए, आप एनवायरनमेंट तो ठीक नहीं कर सकते साहब, आप भोजन तो ठीक नहीं कर सकते एकदम से, वातावरण ठीक नहीं कर सकते, लेकिन झेलने की क्षमता तो बढ़ा सकते हैं। यही एक सोल्यूशन है इस वक्त। पर्यावरण को ठीक करेंगे, 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल लग जाए, मगर इस वक्त क्या करें? अपना रेजिलियंस, सहन शक्ति, झेलने की क्षमता, इन प्रॉब्लम से बैलेंस में रहने की क्षमता, प्रॉब्लम के बावजूद
तो किसी इंसान को बोले कि आपको धक्का दे, तो आप बैलेंस करेंगे ना अपने आप को? कैसे बैलेंस करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? जब चक्कर आते हैं तो कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? सांस रोक के करते हैं ना। कोशिश करके देखिए, अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप सांस रोक के करके देखो। तो बैलेंस की क्षमता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? ये कैपेसिटी बढ़ानी होगी, कुंभक की कैपेसिटी बढ़ानी, तब आपका बैलेंस बढ़े। तो इसीलिए ये मैं इतने एग्जाम्पल देके क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग इंडियन हैं, पर प्रॉब्लम यह कि अपने पढ़ाई सारी अंग्रेजी कर ली। इंडियंस वैसे ही समझदार, जन्मजात समझदार होते हैं। तो आप लोग समझिए कि ये क्या हो रहा है। तो आप अपने बैलेंस में लाने की क्षमता को अगर बढ़ाएंगे तो चीजें आपको इम्बैलेंस नहीं कर पाएंगी। थोड़ा बहुत तो इम्बैलेंस होंगे, बट वो अच्छे से बैलेंस वापस कर लेंगे। जरूरी इस वक्त में यही है कि आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाएं। Ambika Nayarji writes, cannot sit on the chair cross-legged and cannot keep down. It becomes heavy and stiff numbness floaters in the eyes after cataract treatment. सी फ्लोटर्स इन द आईज, जो फ्लोटर्स बने वो तो ट्रीटमेंट की वजह से, जो टीयर होता है ना आपका, जो टिश्यू टीयर है वो दिखाई दे रहा। इट विल स्लोली कम डाउन टू एन एक्सटेंट वेयर इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो नीचे आ जाएगा क्योंकि बॉडी उसको धीरे धीरे करके कम करता जाता है। एक हल्का फुल्का फ्लोटर रहेगा, विच विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बैठ नहीं पा रहे, पांव को नीचे रख रहे हैं तो हेवीनेस आ रहा है। आप इसको ऐसे करके देखें कि कोई भी शरीर की एक्टिविटी से प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर की एक्टिविटी से प्रॉब्लम, बैठ नहीं पा रहे, एक्चुअली में तो कोई काम भी करेंगे ज्यादा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा लेटेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, ये भी बता देता हूं। एक उसका रीजन होता है टू मच ऑफ अ मसल फटीग। मसल फटीग आजकल बहुत लोगों को है, और उसका रीजन शुरुआत में मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, शरीर में डिहाइड्रेशन फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, आप ऊर्जा उतनी पैदा नहीं कर पा, डाइजेशन फैक्टर जो है वो वीक हो गया है, एब्जॉर्प्शन वीक हो गया, आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा चीजों। तो ऐसी स्थिति में कैसे इसको इंप्रूव करें? अगर आप अपने, जैसे शुरुआत में ही बताया, आप अपने शरीर की इन शक्तियों को अगर बढ़ाएं तो दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू टेक केयर। बहुत आसानी से ये संभल सकता है ना, बहुत आसानी से ये ठीक हो सकता है। पर आपको अपने शरीर पर थोड़ा काम करना, अपने कैपेसिटी से धीरे धीरे करके काम करेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपको आलस आ रहा है तो बिस्तर में लेटने से क्या ठीक हो जाता है? वो जितना लेटेंगे उतना आलस बढ़ जाता है। थोड़ा आराम से चलेंगे, धीरे से चलेंगे, थोड़ा यूज करेंगे शरीर को, तो आलस जाता है, एनर्जी बनती है। एक्टिविटी जो आपको परेशान करती है, मगर वैसे ही एक्टिविटी आपको तरोताजा भी करती है। एक एग्जांपल कि आप कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन डांस करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। किसी को डांस पसंद है, उसको बोलो कि डांस करने से कैसा लगता है, बोलेंगे अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है। तो आपको कैसे एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी करनी है इसका जरूरत नहीं, कैसे करनी है ये भी सीखना हो, क्योंकि एक्टिविटी करने से एक्चुअली में आप फ्रेश हो। तो अष्टांग चिकित्सा में आपको थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा शरीर पर। हम आपको ये भी बताएंगे कैसे करना, ताकि आपको ये रिजुवनेट कर दे, फ्रेश कर दे, आपकी शक्तियों को बढ़ा दे, आपको काम करने में अच्छा लगने लगे, अब और ज्यादा कुछ करना चाहें लाइफ में। अभी तो काम से भागते हैं सब, फिर और ज्यादा एक्टिविटी करना चाहिए। मन में प्रसन्नता होती है तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कहानी घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे 84 फैक्टर्स होते हैं, 84 फैक्टर्स, उनमें से कई फैक्टर्स कमजोर हैं। हम वही डायग्नोसिस भी करते हैं, कौन से फैक्टर्स कमजोर हैं, कस्टमाइज मेथड देते हैं उनको ठीक करने के लिए। धीरे धीरे उन पे काम कीजिए, देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी।
Meena Hari writes, I have thyroid, pinched nerves, and my soul and feet burning and tangling sensation with numbness. Now, again, the same question. Now I'll answer it in a different manner. मैं आपको इसको दूसरे तरीके से आंसर करके करता हूं. थायराइड, थायराइड का मतलब क्या? आपको लगता है थायराइड हार्मोन आपके इम्बैलेंस में है तो थायराइड ग्लैंड में इश्यू है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. केवल थायराइडाइटिस जब हम कहते हैं, हाशिमोतो ऐसा कुछ कहते हैं, तो उसका मतलब वो थायराइड में इशू. अदरवाइज थायराइड में यूजुअली इशू जरूरी नहीं कि थायराइड में इशू हो. आपका इशू पिट्यूटरी ग्लैंड में हो सकता है. हाइपोथैलेमस, छोटा ब्रेन होता है पीछे, हाइंड ब्रेन, उसके नीचे एक जगह हाइपोथैलेमस होता है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां पे इशू, पिट्यूटरी पैथोलॉजी कह सकते हैं, वहां पे इशू आ सकता है. जब भी आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, आपको याद है आपको 20 साल से बोला गया है प्रोटीन खूब होना चाहिए आपके भोजन में. लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं. तो आप अगर जीवन में प्रोटीन, सोयाबीन खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, खूब दबा के, यही सब चीजें, प्रोटीन प्रोटीन चाहिए. जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, आपके हाइपोथैलेमस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है. आपका शरीर प्रोटीन के लिए नहीं बना हुआ, बिकॉज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेस एंड मेक्स इट्स ओन प्रोटीन. आप जो प्रोटीन खाते हैं वो नहीं मिलता शरीर को, आपका शरीर अरेंजमेंट करता है अपने हिसाब से, अपना प्रोटीन बनाता है. तो कहने का मतलब प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो थायराइड का इशू आ जाएगा. प्रोटीन एलर्जी है ये. इन्फ्लेमेशन तो इसके अंदर होता ही है, क्योंकि प्रोटीन खा रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन होगा बड़ा. तो पहली बात, इन्फ्लेमेशन अगर आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व वीक है, या ये कह लीजिए आपकी वात टेंडेंसी है. लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है? वात प्रकोप का स्थान है. अगर आपकी वात की टेंडेंसी है तो जो इन्फ्लेमेशन होगा वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ज्यादा होगा. अगर आपकी कफ की टेंडेंसी है तो अपर पार्ट, माइग्रेन है ना, माइग्रेन पेन सिर में आ रहा है, फिर आंखों में, मतलब सुनने में, देखने में, या साइनोसाइटिस, इस तरीके की चीजें ऊपर होंगी. सर्वाइकल का इशू होगा, पित्त में बीच वाले पार्ट ऑफ द बॉडी. कहने का मतलब अगर वात की, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की वीकनेस की टेंडेंसी है तो वहां इन्फ्लेमेशन दिखाई दे. इन्फ्लेमेशन तो है ही, क्योंकि थायराइड का इशू है. दूसरी चीज, लिवर का भी इशू होता है इसमें, क्योंकि आपका T4 जो है T3 में कन्वर्ट होता है. टेट्राहाइड्रोथायरोनिन ट्राईहाइड्रोथायरोनिन में कन्वर्ट होता है, लिवर में कन्वर्ट होता है. तो आपके T3 T4 का इशू है ना अगर, तो लिवर का इशू है. और लिवर इस वक्त में सभी का वीक है, क्योंकि बचपन से केमिकल बम्बार्डिंग हमने लिवर पे किया. एक बात बताइए, जमीन पे हमने फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, तो जमीन खराब हो गई. आज कहते हैं जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग. आपने अपने शरीर पे कितनी बम्बार्डिंग की केमिकल की, तो आपका शरीर नहीं खराब होगा. इसकी जैविक खेती कब शुरू करनी है? कभी तो करना पड़ेगा. कब तक मैनेज करके रखेंगे? मैनेज तो क्रिमिनल को किया जाता है, जेल में मैनेज किया जाता है ना. तो अपने शरीर को हम ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं ना, क्रिमिनल की तरह. इससे तो छुटकारा चाहिए सभी को, और ये तभी होगा जब ये वीक फैक्टर्स जो हैं आपके शरीर पे, इन पे आप काम करके इनको स्ट्रेंथ देंगे और आपकी दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम हो जाए. अगर आपके शरीर में स्ट्रेंथ और इसके फैक्टर्स वापस आएंगे, देखेंगे आपको थायराइड की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस टाइम बाद में आपके थायराइड के सिम्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और आपको थायराइड की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक्चुअली खा क्या रहे हैं? सिंथेटिक T4 ही तो खा रहे हैं. थायरोक्सिन, थायरोनॉम जो आप खाते हैं, क्या सिंथेटिक केमिकल T4, सिंथेटिक T4, which is not good for the body. वो शरीर के लिए अच्छा थोड़ा ही है वो. So improve the factors of this body. अरेंजमेंट फैक्टर कहते हैं इसी को, जो प्रोटीन को अरेंज करने की क्षमता है आपके शरीर की. इसी को बुद्ध दोष कहा जाता है, इसी को बुद्धि कहा जाता है.
अरेंजमेंट करने की क्षमता, इसको बढ़ाएंगे तो थायराइड इशू ठीक हो जाएगा। पर आपके शरीर की जितनी सिम्टम है वो तो हम इस प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद में in many cases you'll see your thyroid problem will evaporate. If there is a little bit problem left, then we'll suggest you something else. Lakshmi Kirthi Vasanji writes, I cannot do Pathan Kasana and Artha Siddhasana. I can walk, I can do Surya Namaskar, I cannot sit cross-legged, pain radiating, please. Padmasana, Ardha Siddhasana. You are basically talking about Padmasana and Ardha Siddhasana. Why do you want to? Ardha Siddhasana is ठीक है, वो आजकल it's an easy posture, but many people have joint issues, stiffness in the joint, and thereby they are not able. See, what is strength? Strength is flexibility. स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपका शरीर एकदम स्टिफ, जो जिम करके एक बंदा आया वो चलने में भी उसको तकलीफ, उसके देखो उसकी चाल कैसी होती है, रोबोटिक वॉक। नो, मेकिंग योर जॉइंट स्टिफ डजंट मेक यू स्ट्रांग, रादर इट मेक्स यू इवन वीक। तो क्या करना है? सो आई हैव टोल्ड मेनी पीपल टू डू दिस। यू डू कुंभक फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर डूइंग कुंभक यू डू एनी काइंड ऑफ hatha yoga posture, कोई भी आसन करें आप, you'll see the posture will become very easy. The posture will become very easy. So what is the first thing that Kumbhak does? It just makes your joints flexible. सबसे पहला असर जो कुंभक का देखेंगे अपने शरीर पे वो है कि आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल होने शुरू हो गए। So in few weeks time and a few months time you'll see that things which were very very difficult for you, and there are many examples. बहुत लोगों के टेस्टिमोनियल आते हैं कि हम तो बैठ नहीं पाते थे, आप आराम से बैठते हैं, in this posture, in that posture. There are many testimonials now. So making your joints flexible is also important in making your body effective in any which. आपके शरीर से आप काम लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो ताकि आप अपने हिसाब से काम ले सकें, और उसके लिए आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाना और स्ट्रांग बनाना जरूरी। फ्लेक्सिबिलिटी ही स्ट्रेंथ है, आप समझिए, फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ। तो व्हाट कुंभक डज इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कुंभक, आई एम टेलिंग। यू कैन गो टू द यूट्यूब, सी देयर आर फ्री कुंभक्स वी टीच। वो भी अगर आप करेंगे ना, you'll see a change in the flexibility of your joint. But then it's always good that you find out what are the weak factors in your body and work upon it specifically to get better result and to get a deeper result. तो ये तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। Okay. AS writes, how rheumatoid arthritis can be cured? I have explained how rheumatoid arthritis, what is rheumatoid arthritis, what is autoimmune disorder in one manner. I have explained from one perspective. I can actually explain it in from various perspectives. But the ultimate thing about autoimmune disorder is there is an imbalance of regeneration and degeneration. Regeneration or degeneration factor body में imbalance आ गया, so the body is in risk. बॉडी रिस्क में आ जाता है, तो ये अपना इम्यूनिटी बढ़ा के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। नाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, एंड वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, ठीक है, आप अपने रिलेटेबल टर्म से समझो, आप कैसे बचाते हैं अपने। व्हेन समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मुक्का मार रहा है, समबडी इज हिटिंग यू, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कैसे बचाते हैं अपने आप। You make yourself stiff, टाइट कर लेते हैं अपने आप को, टेंस कर लेते हैं अपने आप को, make yourself stiff, isn't it? अपने आप को टाइट कर लेते हैं, तो टाइट करके बचाते हैं, तो बॉडी भी तो जॉइंट्स को स्टिफ करके बचा रही है ना अपने आप को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, वो भी तो बचा रही है बॉडी अपने आप को। तो रिस्क अगर आप कम कर देते हैं, हाँ, तो आपकी बॉडी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योर रेजिलियंस विल इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क कम कर दिया
increase the resilience, your body will not need to protect itself. अच्छा, एक और इसी एग्जांपल में जो कोर एस्पेक्ट है उसको समझिए. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेथ? व्हाट डू यू डू? सांस को क्या करते हैं आप? रोक लेते हैं. So your body is saying, if you increase the breath hold capacity of your body, you will be able to protect yourself. And that is what we are teaching you. तो आपका तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे ही जाएगा और दूसरे तरीके से नहीं जाएगा. इम्यूनिटी थेरेपी अगर आप करेंगे, इम्यून थेरेपी, तो उससे नहीं जाएगा. वो इमीडिएटली थोड़ा मैनेजमेंट होता है, अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय योर होल बॉडी. तो अपने ही शरीर के फैक्टर्स को इस्तेमाल कीजिए. द वे योर बॉडी इज इंडिकेटिंग, तब देखेंगे कि आप यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. Dr. G. O. Prakasham writes, how to correct Vat, Pitta and Kapha? So how to correct? अच्छा, see, एक चीज मैं आपको बताता हूँ. These three things doesn't work separately. हाँ, ये तीन चीजें ना सेपरेटली काम नहीं करते. तो बेसिकली it is only kapha which is life. How to mold it and move it is the only question. It is shleshma which is life. If you are able to move it, mold it, and move it in a right manner, that is called as life. If it doesn't molds and moves in the right manner, that is disease. So it is kapha, basically kapha. Kapha को ही पित्त और वात, पित्त is the energy, वात is the movement. उसका मोल्डिंग और मूवमेंट कैसे सही करना है. ठीक है. सो आपके हाथ को मूव अगर मैं करना चाहता हूं, ऐसे अपने आप को मूव करके देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बिहाइंड व्हाट डिड यू डू टू कंट्रोल दिस मूवमेंट? करके देखिए. इट्स सो सच अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. सी, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड कंट्रोल द मूवमेंट, इजंट इट? थोड़ा तेजी से मूव करो. देखो पीछे, आप सांस रोक के इसको मैनेज करते हो ना. हाउ टू कंट्रोल वात, पित्त, कफ? सिंपल. कुंभक इज द वे टू कंट्रोल वात, पित्त, कफ. एक तो चीज ये बता, यू कैन ऑल्सो यूज सब्सटेंस. चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट इज एक्सटर्नल थिंग. वो बाहर से है. आप कैसे करेंगे? यू ओनली डू इट थ्रू कुंभक. देयर इज नो अदर वे. Then you can use some औषधि. You can also use some rasayana to control vata, pitta, kapha. तो पहली चीज तो इस्तेमाल कीजिए. This is primary, that you learn to control vata, pitta, kapha with your own body's force and factors. The second thing, if required, you can take support of some औषधि, but that will be support. और रसायन, इनका सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं. देयर आर अदर थिंग्स थ्रू विच ऑल्सो यू कैन डू, बट अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इट हैज टू बी मेड वेरी इफेक्टिव फॉर मेकिंग इट इनटू अ थेरेपी. बट वी एक्सप्लोर दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इन आवर प्रोग्राम. जैसे फॉर एग्जाम्पल, खुश रहना मुश्किल हो गया, थ्रू इमोशंस ऑल्सो यू कैन कंट्रोल योर वात, पित्त, कफ. But it is just a little support system. I'm not talking in terms of therapy. Kumbhak is therapy. Aushadhi can be used as therapy, or rasayana can be used as therapy. Other factors also can be used as a supportive measure. But आप ये कीजिए, other things can also be used as a support. वो भी आपको हम प्रोग्राम में बताते हैं. Okay, Dinesh Kumar Sood writes, following vasectomy operation, I developed slight pain in my right testicle and at times it travels towards my right thigh. It has affected sexual prowess also, as I had undergone prostate removal surgery about 10 years back. Vasectomy कभी-कभी अगर इसको ठीक से परफॉर्म नहीं किया जाए तो it impacts some nerves. Nerve का impact, the impact on the nerve actually can create a problem for long period of time, sometimes for the whole life. So क्या इसका कोई solution है?
yes, there is a solution. If you have to actually increase the strength of that area and do something to rearrange the neuromuscular uh, neuromuscular system, वहां पे जो neuromuscular arrangement है ना उसको थोड़ा सही करना पड़ता है. उसको कैसे करेंगे? There is a process that will give you, but we'll need to also diagnose you and see what other things you are vulnerable in. He's also done Ashtaang Pratishtha for respiratory problem. Ashtaang Pratishtha basically is for asthma and allergic things. That is oriented towards lung. It's a different issue. ये issue आपका neuromuscular है. In Ashtaang Pratishtha, we don't address neuromuscular issue, especially it is designed around kurma. वो kurma के around design है. Ashtaang Chkitsa is like all the physical aspect, just physical aspect of your body. So neuromuscular problem. This is a neuromuscular problem. We can actually give you methods. In fact, in Hatha Vinyasa, in this there is Hatha Vinyasa and Marma Nyasa also. Marma Nyasa, Hatha Vinyasa. ये दो चीज है जिसमें we address this. हम इसको address करते हैं for the lower part of the body, for the hip region also. हम कुछ ऐसे particular movements भी कर रहे हैं इसके अंदर. So if you have done Ashtaang Pratishtha, and I would say कि अगर आपको ये करना है तो you can do these two programs together, but Ashtaang Pratishtha में आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा. You will be able to do only certain practice that will tell you once you come to the program. Okay. Nirmala Joseph writes, I'm in treatment of Government Homeo Medical College Hospital, TVM since 5 years. My PCOD cured and fatty liver due to intake of antibiotics. But my body joint pains told as above by me is the severe problem now. Nirmala Joseph. Body ache, when you're saying body ache, body pains बोल रहे हैं. So usually what happens कि maybe your thyroid levels have become normal. मगर जो thyroid hormones है ना, it is responsible for the metabolic factor of your body. If the metabolic factor of your body is not proper, even though your numbers are proper, the metabolic strength is not good, you will get this pain. इसे आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलूं तो this is समान factor of your body. इसको समान कहते हैं. The distribution factor. वो थायराइड के लोगों के अंदर वैसे ही कमजोर होता है. So the distribution factor hasn't become that strong. Maybe the numbers have come down or become balanced. Numbers आपके शायद सही आ रहे हैं, but the strength वो recover नहीं हुआ. The samana strength is not fine. Unless and until the samana strength becomes fine, body pain, body fatigue, ये तो होगा ही. Apart from that, sometimes what happens, कभी-कभी क्या होता है, it is a seasonal issue also. कुछ लोगों के लिए ये seasonal issue भी होता है. कि in this period they feel more fatigue, and the moment season changes, they become pretty better. So anyway, in both the cases, getting the body into a certain balance, that factor is anyway weak. वो तो weak है. You do take any treatment, कोई दूसरा treatment आप, but improving the forces and the internal functioning of this body is something that everybody should do. हर एक को ये जरूर करना चाहिए.
आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम्योपैथी ले सकते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, एनी अदर सिद्धा ट्रीटमेंट, Chinese medication or whatever. Chemical is something that you take only when it is really urgency. Otherwise, try to avoid it. बाकी कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, any treatment is an external intervention. बाहर से ही तो दिया जाता है. It doesn't increase the forces, factors and the strength of your body. कोई भी ट्रीटमेंट आपके बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता. It is your body which increases the strength. If you work directly upon your body, you can take other treatments also. You'll see the condition will improve much faster and it will be more permanent. iPad writes rheumatoid arthritis and hemoglobin deficiency, acute knee pain, increase in ESR and CRP. See, ये तो हमने बात कर लिया. Rheumatoid arthritis. You watch this recording again. We'll share this recording in the WhatsApp group. इसको बहुत डिटेल में मैंने बता दिया. Rheumatoid arthritis क्या होता है in relatable terms. आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं. Acute knee pain. Obviously, I talked about knee pain. If your body is not able to handle itself, the anti-gravity factor of the Udana is weak, it will impact. Or if you have Vata tendency, if your age is such that you are in a Vata age, then it will impact the lower part of the body. So how to come out of this? That is what the program is all about. ये program उसी के लिए है. You can watch the recording again. वो भी देख सकते हैं. Okay. So we've completed all the questions in the chat. Swamiji, do we have time for people to ask directly? एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं. Somebody wants to ask. Okay. So if somebody wants to ask, okay, we have hand raised. Jagdeep A. Vohra ji, I'll just unmute you and you can ask your question. जगदीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी, कर लिया मैंने. नमस्कार. अच्छा स्वामी जी, मुझे ये पूछना था. हाँ. मुझे ये पूछना था कि 2012 में मैंने दोनों ही रिप्लेस किए. मैं ये प्रोग्राम अटेंड करके उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ. इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल. जब भी आप हिप रिप्लेस करते हैं या कुछ भी रिप्लेस करते हैं तो आपका शरीर उसको ना एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये शरीर बाहर से चीज एक्सेप्ट नहीं करता. तो आपको स्टीरॉइड पे रखा जाता है काफी समय तक. स्टीरॉइड दिया जाता है काफी समय तक ताकि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम डाउन रहे, वो रिबेल नहीं करे, है ना, वो विद्रोह नहीं करे. विद्रोहियों को दबा दिया जाता है, ऐसा है ना. तो क्रूरता कर रहे हैं ना हम, कुछ तो क्रूरता करना पड़ता है. ठीक है ना. क्रूरता जब आप किसी पे करते हैं तो आपका इम्यूनिटी तो सफर करता ही है ना. उसको आप दबा के रखेंगे तो आपका इम्यूनिटी सफर करेगा, आपका ऑर्गन का फंक्शन सफर करेगा, आपके शरीर में रोग निरोधक क्षमता, बीमारियों से बचने की जो कैपेसिटी है, बैलेंस में आने की कैपेसिटी कम हो जाती. तो ये तो होता ही. अब उसको बढ़ाना भी तो जरूरी है. एक बारी आप शरीर के अंदर कोई चीज एडजस्ट हो गई तो कम से कम अपने बॉडी के वो स्ट्रेंथ फैक्टर्स को तो बढ़ाइए, तब आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी. दूसरी चीज ये है कि जो मैकेनिकल चीज है और जो आपका लिविंग टिश्यू है, इन दोनों का सामंजस्य आपको अगर ठीक बनाना है तो आप मान के चलिए कि आप कोई दूसरा रैकेट इस्तेमाल, बैडमिंटन का रैकेट इस्तेमाल करते हैं शटल को मारने के, तो आपकी पकड़ उस पर अच्छी होनी चाहिए ना, तभी आप अच्छे से खेल पाएंगे.
आपके जी, शरीर जी। की पकड़ भी उस मैकेनिकल चीज पे अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, पकड़ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी मुट्ठी बांध के जोर से पकड़िए जरा। ये पकड़ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आप अंदर क्या कर रहे हैं? तो आप सांस ब्रीथ रोकते हैं होल्डिंग। तब जाके पकड़ बढ़ती है ना। जी, सांस रोकते जी। हैं तब जाके पकड़ बढ़ती है। तो अगर आपको उसको और अच्छे से इस्तेमाल करना है तो भी कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आप एक तो चीज ये हो गई। एग्जैक्ट। दूसरी चीज हो गई, आपको इम्यूनिटी ऑर्गन फंक्शन तो बढ़ाना ही होगा ना, क्योंकि वो जानबूझ के कम किया गया, तो वो तो बढ़ाना है। तो आपको तो और जरूर, मैं तो कह रहा हूं और जरूरी है, कंपलसरी होना चाहिए। अभी तो जैसे जैसे बुद्धि खुलेगी आगे जाके सभी लोगों की, क्योंकि आप देखिए दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या है? हार्ट अटैक। नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ क्या है? कैंसर। और नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ क्या है? डॉक्टर। राइट। मैं नहीं एग्जैक्टली, बोल रहा, एग्जैक्टली। आप ये रिसर्च देख लो, ये रिसर्च अवेलेबल है गूगल में। अमेरिका जी, में हाँ। 25 लाख लोगों के ऊपर काम किया गया और पता लगा कि ये है। तो अब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं वो जानबूझ के नहीं कर रहे, मगर ऐसा हो रहा है, उनके अच्छे इंटेंशन के बावजूद भी हो रहा है। तो वो कुछ भी अच्छा कर लीजिए आप अपने शरीर के ऊपर, मगर उसको वापस से रिकवर करना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है। हिप रिप्लेसमेंट अगर जरूरी है तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसके साथ में सही तरीके से लाइफ जी पाए। अदरवाइज वो हिप जी, जी। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट किसी काम का नहीं। इसीलिए कुंभक और जरूरी ज्यादा हो जाता है जब आप ऐसा कुछ मैकेनिकल आपके शरीर में होता है। Okay, थैंक यू। Dr. G. Om Prakasham, I have unmuted you. Namaskar ji. You can ask a question. Namaskar ji. Thank you for giving. नमस्कार। Sir, your voice is not Joint- loud enough. आपकी आवाज धीरे आ रही है। So the joint strength, how to increase either internal kumbhak or external kumbhak, sir? External kumbhak is never used for increasing the strength of this body. External kumbhak is always used for adhyatma. It is always used for adhyatma. And external bahya kumbhak, when we say, it's a very vast subject. We have actually lost most of it. Right, sir. Our effort is also to revive the whole. Right. No one is following. If needed, in some people only. That is why we do the diagnosis. In some people, if there is a certain factor which is weak and where it is needed, then only we give this external kumbhak very, very cautious. Otherwise, it is always internal kumbhak, because we are giving a direction to a particular organ function, to a particular factor. So it has to be external kumbhak in a particular ratio. It is not just the hold. It is not just the hold. It is the whole. The game is in the whole thing, not just one part of it. I'll give you an example. If you inhale for 1 unit, hold for 1 unit, exhale for 4 units, then it impacts your liver. It is not just the hold. It is the complete game. If you inhale for 4 unit, hold for 2 unit, exhale for 1 unit, then it impacts your kidneys. It is not, the kumbhak is basically to play the game of life. It is not breath hold. People think breath hold is kumbhak. Yes, it is kumbhak, but what we are talking about is something much bigger. How you control the whole aspect. The strength behind how you control the whole game of life is kumbhak. It is not just the breath hold. So antra kumbhak or bahya kumbhak, people usually ask. And because they have read something somewhere, the yoga lineage, yoga kalachar carries these things. Although yoga prohibits kumbhak initially, yoga शुरुआत में कुंभक निषेध है, नहीं कर सकते आप, because it is against
means yoga. Yoga means you want to reach to mukti. You want mukti. You want samadhi. And life is 180-degree opposite to samsara is 180-degree opposite to mukti. So initially in yoga, kumbhak is nishedha. आप नहीं करें कुंभक. Only in advanced stages, kumbhak is allowed to actually hasten up the process. And that too, Stamba Kumbhak is a state which is actually the you can say the goal of yoga. It is called as Kaivalya Kumbhak or Stamba Kumbhak. Here we are talking about a very small aspect of Kumbhak. How to make your body more robust, more functional, how to live life more in control. If you have difficulties, how to come out of it. We are talking about a very small aspect of Kumbhak, and that too in terms of how to live life, not how to dissolve life. Yoga is all about dissolving life. We are talking about creating life. So it is mostly antarik, but depending upon the situation of the body and the diagnosis, we suggest things to people. So joint Okay. to muscle strength, how to increase, sir? And how do you make effort? How do you make effort through your joint? How do you lift weight? Without holding your breath, you cannot lift weight. If you increase the kumbhak capacity, your joint strength will increase. What is this ratio, sir? Ratio depends on people to people. Right, So it is not I have not said any number. I said one unit. Why? Because it depends on people to people. right, right. Okay. General. We'll take the last question from Dinesh Kumar Sood, sir. Sir, please ask. I have unmuted. Thank you, Swamiji. Thank you for taking up my question of vasectomy. As a matter of fact, you had suggested that I will have to drop Ashtaang Pratishtha. I don't feel like dropping Ashtaang because it has benefited me a lot. Yes, I yes. haven't used even once inhaler. And I was wondering, Swamiji, if you allow me a minute, in Ashtaang Pratishtha, there is one heart prasar kumbhak. Yes, I was yes. wondering if that can benefit me because it is very difficult also because I cannot do more than 2-3 times. Maximum once I did for 7 times. एक काम कर सकते हैं. What we can do is just post it there. है ना? I'll give you one method. You keep on doing Ashtaang. I'll give you one separate method. Let's see if that works. अगर वो काम कर जाता है ना, so you won't need anything else. Put down this question that I have this condition in that group. So I'll answer it. Right. और आपको एक method मैं दे देता हूँ. From there I'll give you a method. Let's see if that works. अगर वो काम कर गया तो you won't need anything else. Yes, Ashtaang Pratishtha is very effective in terms of increasing the lung capacity. और आपके inhaler का भी use करना ही नहीं पड़ेगा. These are very simple things to handle, but you know, inhaler लेके और steroid लेके लोगों ने अपना शरीर खराब कर दिया. Actually, Also, I have joined support group also. Support group also. हाँ, support group में अगर join support group put the question in support group. I'll give you method there. मैं आपको method दे दूँगा. Okay. We're taking up the last question from AS. Swamiji, my son thalassemia major. Is it thalassemia or thalassemia? Major and thalassemia. And recently developed RA with HLA-B27 positive. How to get rid of RA? Age क्या है? What is the age? Age बताइए. मैंने unmute कर दिया. You can ask directly. AS. Please ask. Okay. Yeah. Please ask. Hello. My son is thalassemia major. Irregular 100. What is the age of your son? Age क्या है? Son's age is 23, sir. 23. Yeah. And recently he developed arthritis. He can join.
He can join. join We this. can join. He can join. It this. will help us. Yes. In everything, in even thalassemia condition. Okay, sir. Thank you very much. Okay, so we've taken all the questions, and if any of you has still got questions, please post in the webinar group, in the WhatsApp group, and we'll answer there only. And if there's any question that is related to the program detail, the payment detail, you please ask in the WhatsApp group. And we're looking forward to seeing you in the new batch starting on Monday. Thank you, Swamiji. Namaskar. Good night, everyone.